देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023 कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान वैश्विक संस्थानों पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने यूएन, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, WHO, WTO जैसे बड़े संस्थानों का प्रभाव ग्लोबली कम होने की बात कही है। Globally, we don't need to hesitate any longer to say the multilateral institutions, not just banks, development banks, but even otherwise, whether it's the UN, the Security Council, or any other, WHO, WTO, are less than effective from where they were made into institutions, from at the point when they were brought in. The level of effectiveness by their intervention that they were to bring in the global scenario is today at less than ideal position. Now, because they've become less effective, we've reached a stage where what we took for granted is no longer to be taken for granted. We thought that if there is a disruption somewhere, the WTO would come into play. If there is a huge big pandemic, the WHO would come to play. Similarly, in developmental agenda of different countries at different levels of development, there would be timely and periodic interventions with which you will see some change with the spirit of inclusiveness so that less developed countries will also have some traction towards achieving their aspirations. But we find that less effective in all across the board in all these institutions. उन्होंने कहा है कि जिस काम के लिए इन संस्थानों को बनाया गया था, उस काम में ये संस्थान कम प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही निर्मला सीतारमन ने देश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो बढ़ते कर्ज को लेकर चिंतित हैं और दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज डेट घटाने के लिए जो कदम उठा रही हैं, हम भी उस तरह के कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। We are conscious of the debt of Government of India today. Compared to many others, it might not be as high as it is. But even there, we are consciously looking at experiments in different parts of the world. And again, some of the data about some emerging market countries, about how they are managing their debt, is something which is actively in our minds in the ministry. And we are looking at ways in which we can bring down the overall debt. And we are, I'm sure, going to be very successful in that because our efforts are very well streamlined to meet India's aspirational requirements, but deal with it with a sense of responsibility so that our next coming generations don't feel the burden that government has left on them. Whereas equally, we need to be sure that money spent has its right returns. So the bank for the buck argument is also something which we've kept in our mind from COVID days. And that is why we took the route to spending public money in creating public infrastructure so that we have better returns for every rupee spent. निर्मला सीतारमन ने इंडिया एट 100 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के बारे में भी अपने संबोधन में जिक्र किया। वहीं उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस जैसे इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के बारे में भी बात की। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जन धन खातों की सफलता की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जब जन धन खाते खुले थे तो उनमें 0 बैलेंस ही रहता था, लेकिन अब इन खातों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मौजूद हैं और इन्होंने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने में काफी मदद की है। बता दें कि ये कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG ने ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसमें देश की वित्त मंत्री ने ग्लोबल चैलेंजेस समेत कई मुद्दों को एड्रेस किया।